अस्सलामुअलैकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। डिफाइन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड इट्स एक्सटेंशन फाइल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसके अंदर जो है वो स्प्रेडशीट्स बनाई जाती हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सूट एंड इज़ वाइडली यूज फॉर टास्क इन्वॉल्विंग। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? डेटा की मैनेजमेंट के लिए, एनालिसिस के लिए एंड विजुअलाइजेशन। एक्सेल प्रोवाइड्स अ ग्रिड लाइक इंटरफेस। ये जो है ग्रिड लाइक इंटरफेस शो कराता है, जैसे लाइनिंग होती है ना, वेयर यूज़र्स कैन ऑर्गेनाइज डेटा इन रॉज एंड कॉलम। जहाँ पर यूज़र जो है अपना डेटा ऑर्गेनाइज करता है, किसमें? रॉ की शक्ल में और कॉलम्स की शक्ल में। परफॉर्म कैलकुलेशन, वहाँ पर वो अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, कोई भी प्लस माइनस करना हो, सम करना हो, एवरेज निकालना हो। क्रिएट चार्ट्स, उधर चार्ट भी बनाए जा सकते हैं, और ग्राफ्स। एंड ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क यूजिंग फार्मूलाज, फंक्शंस एंड मैक्रोज। और वहाँ पर फार्मूलाज भी लगाए जा सकते हैं, फंक्शंस भी। अब इसकी एक्सेल की एक्सटेंशन फाइल क्या होती है? द एक्सटेंशन फाइल यूज बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज, जब भी हम इसकी फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन फाइल होती है XLSX। दिस एक्सटेंशन स्टैंड्स फॉर XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज स्प्रेडशीट। द XML बेस्ड फाइल फॉर्मेट वॉज इंट्रोड्यूस विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये जो फॉर्मेट है इंट्रोड्यूस कराया गया था 2007 में, रिप्लेसिंग द प्रीवियस बाइनरी फाइल फॉर्मेट। जो प्रीवियस था फाइल फॉर्मेट .xls यूज्ड इन अर्लियर वर्जन, ये जो पहले के वर्जन में यूज़ किया जाता था of Excel, the XLSX format offers several advantages. इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए थे, including smaller file sizes, improved data recovery options, better compatibility with other software application and enhanced security features. इससे जो है छोटी साइज हो गई थी फाइल की, इम्प्रूव्ड हो गई थी डेटा की रिकवरी करना, और बेटर कंपैटिबिलिटी हो गई थी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन से। इससे अब आगे है, इन एडिशन टू द .xlsx format, Excel also supports other file extensions such as .xlsm for Excel macro-enabled workbooks which can contain VBA macros, and .xlsb for Excel binary workbooks which use a binary file format for faster loading and saving. These file extensions provide additional functionalities and compatibility options depending on the specific needs for the user. तो इसमें भी यही बता रहे फाइल के नेम के बारे में कि फिर इजी हो गया था। अब इसके आगे हैं ऑप्शंस। डिफाइन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑप्शंस एंड इट यूजेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑप्शंस refers to a set of customizable setting and preferences that allow users to personalize their Excel experience and tailor the application to their specific needs. These options can be accessed through the Excel option dialog box, which provides various tabs and sections for modifying different aspects of the software. Here are some key uses and functionalities of Microsoft Excel option. ये जो है ऑप्शन है, जैसे कि जनरल सेटिंग। इसमें क्या होता है? यूजर्स कैन कॉन्फ़िगर जनरल सेटिंग सच एज डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस एंड द अपीयरेंस ऑफ द यूजर इंटरफेस। Formulas होते हैं, this section allows users to modify formula calculation options. There are checking settings and formula syntax highlighting. It also provides options for controlling iterative calculations and enabling or disabling specific functions. इसके बाद आता है प्रूफिंग। यूजर्स कैन कस्टमाइज ऑप्शंस रिलेटेड टू स्पेल चेकिंग, ऑटो करेक्ट एंड लैंग्वेज प्रेफरेंसेस फॉर प्रूफिंग टूल्स. They can add or remove custom dictionaries and control how Excel handles errors and inconsistencies in the data. फिर आता है सेव। This section allows users to set default file formats, auto recovery intervals and options for
Saving workbooks, users can also configure privacy settings, including the removal of personal information from file properties. फिर आता है advanced. The advanced options provide a wide range of settings for advanced users. These include options related to editing, display, formula calculations, data importing and exporting, charting, error checking, and macros. Users can fine-tune Excel's behavior and performance to suit their specific requirements. फिर आता है 6 पे कस्टमाइज रिबन. एक्सेल ऑप्शंस allows users to customize the ribbon interface, add or remove tab and commands यानी कि इंस्ट्रक्शन देना, create custom groups and assign macros or frequently used functions to the ribbon for easy access. Add-ins, users can manage Excel add-ins, enabling or disabling them as needed. Add-ins are additional software components that extend Excel's functionality, offering features such as data analysis, data connectors and स्पेशलाइज्ड टूल्स. तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. दुआओं में मुझे याद रखिएगा. जज़ाकल्लाह खैरा.